So router helps with packet transmission over the internet, and their purpose is to route the packets over the internet, helping the packets to get one step closer to their destination. Routers do that mainly because of routing table. So there's one very important thing in routers. It's actually a very complex set of algorithms which make our routing tables. This routing table does not only consider the number of points before the destination or nodes before the destination, but it also considers a lot of other factors, including a traffic congestion. So it would see that, for example, I'm this router, so I would think, okay, if I send this packet to another router, so how much is the traffic between me and the other router? How many more steps or nodes I have to go through? So it looks on a different varied kind of things before routing the packets. So in this case, what we have done is that on our computer, on a browser, for example, if I go onto a browser, so I go on to Udemy. Yeah, I go on to Udemy and I click on any video. For example, I click on this video, the complete web developer course. So what happens is when I click this video, a request is being sent from my computer to the Udemy server, and I would explain you how this happens in a real world. So I was showing you that we have clicked a certain video on Udemy website. Whenever you click something or whenever you refresh your web browser, you are actually sending a request to the server of that website. In that case, the server is the server of Udemy website. So what would happen is that a packet would be generated from my PC. It would move on to the switch device. Switch device would first understand the packet. It would understand the destination where it needs to go, and then it would forward the packet towards the router. Then the router would again understand the destination of this packet and then forward it to an ISP. And through a ISP, this packet would go on to our internet. Through internet, by moving along different routers, because you can consider internet, this cloud, as a lot of routers inside it. So in the internet there could be a distributed structure with a lot of routers inside it. So my package would go through a lot of routers until it would reach the destination here, and then it would go on to the router of Udemy, and then eventually into a server. When it would go on to a server, my server would understand, the Udemy server would understand that my PC has sent the request for a video or for a web page. It would compile those resources and send those resources back to me. Before I show you, how it goes back, let me first tell you one other idea. Most of the big companies, they have distributed their servers all around the globe. They do that to make their service more effective and efficient, so that whenever user clicks on some resource, closest server could fulfill that request, and that would increase the efficiency. It also increases the reliability and effectiveness of the company. For example, if one server is not working, the other server can fulfill the request. हमारे पास इस हिसाब से एक अल्टरनेटिव बन जाता है. अगर एक सर्वर नहीं भी काम कर रहा तो दूसरे सर्वर से रिक्वेस्ट हो जाती है. इस तरीके से जो सिस्टम है वो परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. तो ये इसमें मकसद है. तो अब आप देखें कि अगर आप ये यूडेमी के सर्वर फॉर एग्जांपल देखें, या गूगल जो है, इनके सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इनका एक ही सर्वर नहीं होता किसी एक जगह के ऊपर, बल्कि इन्होंने दुनिया में डिफरेंट जगहों पे अपने सर्वर को लॉन्च किया होता है और उधर उन्होंने रखे होते हैं. जब हमारा पैकेट इस सर्वर के पास पहुंचेगा तो सर्वर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, या उसको ये चीज़ समझ आएगी कि अच्छा, मेरे जो कंप्यूटर है फलानी लैंड से उसने ये रिसोर्सेज मांगी हैं. सर्वर का काम ही ये है कि ये रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करता है. तो ये क्या करेगा कि वो सारी रिसोर्सेज जो मैंने मांगी हैं, तो ये उनको कंपाइल करके तो इसको वापस भेजेगा हमारी तरफ. ऑल्दो यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये सेम वे से वापस जा रहा है जिससे ये आया था. रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता. रियल लाइफ में कभी भी पैकेट सेम वेज को नहीं फॉलो करते, बल्कि हमेशा डिफरेंट वेज को फॉलो करते हैं. लेकिन यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको ये शो कर दिया कि ये पैकेट वापस मेरे कंप्यूटर पे जा रहा है. जब ये वापस मेरे कंप्यूटर पे जाएगा
तो इस तरीके से होगा कि इन रिसोर्सेज के अंदर वेब पेज का कोड भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, वो जाकर मेरे वेब ब्राउज़र के ऊपर रेंडर करेगा। ये खाली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वेब सर्वर की। ये सारा कुछ तकरीबन मिली सेकेंड्स में होता है, ब्लिंक ऑफ एन आई में होता है, इसीलिए हमें इतना पता नहीं लगता। यही मैं चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ की अप्रिसिएशन हो। जब भी हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं या जब भी हम वहाँ किसी चीज़ को क्लिक करते हैं, every time this process happens and it's such a long process, but because our transmission rate is very very fast, that's why it happens very quickly for us. But in real life there's a lot of depth involved and there are a lot of places where our packet goes through. So हमें ये चीज़ समझनी है, जब भी हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और हम रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के सर्वर पे भेज रहे हैं, और वो सर्वर जब उस रिक्वेस्ट को हासिल करता है तो वो रिस्पॉन्स भेजता है हमें। तो हमें ये याद रखना है कि इंटरनेट के ऊपर और स्पेशली वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आप ब्राउज़र पे किसी चीज़ को रिफ़्रेश करते हैं, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेजता है। सो इसको हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल कह सकते हैं। तो अब हम इस चीज़ की समरी देखते हैं। सो वी नीड switch device or access point to connect our computers within the LAN or communication. To send the packet over the internet, we need to use router. Main function of router is to connect our LAN to internet. In a way, it connects our LAN to different LANs situated anywhere around the globe. Our communication over the internet happens through packets, which are chunks of information. So as I explained you before, that packets are little pieces of information. They are a portion of information, and they are being sent over the internet through our router. And packet transmission is kind of a backbone of our internet. It's a very important thing. That's how internet works. This packet transmission over internet is carried out by routers. It is important to understand request response cycle for our web pages to render or for digital communications to take place. So जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया कि किस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल इंटरनेट के ऊपर होता है। होपफुली ये ज़्यादा डिटेल नहीं थी और आपको सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।